has seen unprecedented destruction in this Teesta Flash Flood. And one of the biggest challenges that we'll bring out in this report is how roads are completely non-existent, with main bridges having been washed away by the flood waters. This is one such example, a bridge in Singtam washed away by the Teesta Flash Flood. People here are struggling to simply get from one place to another. We'd struggled to get into Singtam, get into Rangpo and reach these places that have seen massive destruction. It's taken almost double or triple the time that it would take to reach these places. We finally managed to get here, and this is an effort to bring to you how the state is coping with this massive disaster, with roads, homes and everything along the banks of the Teesta being washed away by the flood waters. A viral image from the Teesta Flash Flood. In a sign of his commitment to his constituents, Sikkim's Public Works Minister Sandrup Lepcha zip-lined across a surging river in flood-hit Sikkim to start rescue operations in Chungthang, an area worst hit by the flash flood. Chungthang, which saw parts of the 1200 megawatt Teesta 3 dam being washed away, is part of his constituency. On Saturday, Mr. Lepcha was leading a team from Pegong village in Mangan district to Chungthang. What remains of Chungthang is only devastation, and many are still missing. जो देख रहा है ये टनल में था, उसका ड्यूटी बोल रहा है जो आगे का, वहाँ से अब 14 आदमी अभी मिसिंग है, उसमें मेरा भाई भी है. The Indo-Tibetan Border Police rescued over 50 civilians at Chungthang through a zip line. They are looking for others. Residents say when the South Lonak Lake in the upper reaches of Sikkim burst its banks, flooding the Teesta River and creating a whirlpool in the Chungthang Dam, parts of the dam was washed away. The town was ravaged and livelihoods lost. में जो छुआ जो कपड़ा में सिर्फ वही कपड़ से निकल गया. उसके बाद में आया आके सिर्फ हम लोग से डॉक्यूमेंट है जे वो डॉक्यूमेंट सिर्फ लेके चला गया और सब कुछ जो था सब कुछ चला गया. हम लोग चला गया, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा नहीं है. हम लोग अभी ऊपर में रह रहे हैं. यहाँ से कम कितना होगा, 4-5 किलोमीटर ऊपर में होगा. किस गाँव उधर अभी तो वो एक मेट का है हम लोग का, रामकुमार मेट का सेकंड मेट है, वही उधर ही खाना पीना खा रहा है, हम लोग खिला रहा है. Downstream at Dikchu, this Buddhist monk is praying by the side of a broken road, seeking divine intervention for the state. इस धर्म का ये पहला का पूजा देवी तरफ पूजा पाठ करता है. इसके लिए हमारा पब्लिक लोग का बोल रहा है, लामा लोग का पूजा करते से शांति के लिए इधर हमारा बातें की जरूरी है. Beyond Chungthang, tourist hotspots Lachin and Lachung are completely cut off, leaving over 3,000 tourists stranded. Security forces and the Border Roads Organization is trying to rebuild alternative roads to cut off areas. In high altitudes of North Sikkim, in tourist hubs like Lachin and Lachung, the Indian Army sheltered stranded tourists for 6 days, providing food, healthcare services and also connectivity so that tourists could talk to their families. Finally, when the weather cleared, the tourists were flown to safety by the Indian Air Force. The state-of-art Chinook choppers and the IAF's old workhorse, Russian-made Mi-17 helicopters were used to evacuate thousands of tourists. A whole group of us are currently here in Dikchu, and we're being taken very good care of by the Indian Army. They've taken us to the base, they got things organized very, very rapidly, and we're very, very appreciative of the entire Indian Armed Forces.
At Chungthang, the worst hit area, bamboo bridges are being constructed and people are being rescued every day. Chungthang residents blame the massive destruction on the blockage created by the Teesta Urja Stage 3 dam, which they say was not opened in time. The local Gurudwara has remained the only safe refuge for people. जिस रात जो हादसा हुआ तो उस रात तो हम लोग सारे यहाँ से शिफ्ट हो गए, आगे पहाड़ की तरफ चले गए या भूख चले गए। नेक्स्ट डे हम 4 तारीख को फिर चुंगथांग में आए, लेकिन 4 तारीख को हम लोगों ने यहाँ खाना वगैरह बनाया, लोगों को खिलाया, लेकिन उस रात फिर हम लोग यहाँ रात में गए, फिर ऊपर चले गए। 5 तारीख को फिर लगातार कुछ लोग यहाँ रह रहे हैं जिनके घर टूट गए, उनको घर के लिए हमने एक रूम लॉट कर दिया है उनकी फैमिली को, और लंगर कंटिन्यू 1500-2000 आदमी का सारा दिन लंगर 11 बजे हम लोग लंगर स्टार्ट कर देते हैं और रात तक चलता है। तो कैंप था, वहाँ पे सिग्नल में काम करने के लिए आया था, एक डिवाइस इंस्टॉल एंड कमीशनिंग के लिए आया था। तो एक दिन के लिए आया था, जिस दिन फ्लड आया था उसके दिन में आया था, रात को फ्लड आ गया, 2:30 बजे काम खत्म हो गया, बट मैं निकल नहीं पाया जस्ट बिकॉज कि यहाँ से गाड़ी मिलती नहीं है, तो सुबह में मिलती है, उसके बाद मिलती नहीं है, तो मैं निकल नहीं पाया। उसके बाद होटल प्रेमा में मैं रुक गया था। होटल प्रेमा में रुकने के बाद जब 12-12:30 बजे के आसपास सब निकल गया था, मैं अकेला फंस गया था। चारों तरफ पानी, बिल्डिंग तिनके की तरह ये सब टूट रहा था, ये सब सामने देख रहा था, जैसा लग रहा था कि मैं मौत को एकदम सामने से देख रहा हूँ, ठीक है। और मुझे लग रहा था बस थोड़ी देर में मैं भी इसी में बहते हुए नजर आऊँगा, बट किसी तरह मेरा मोबाइल जो है वो फुल चार्ज था, उसकी टॉर्च से किस तरह देखते देखते जो है पता लगा कि कहाँ से निकलना है। अपने आप को रेस्क्यू करने के लिए जैसे केबल होता है, ये सब जुगाड़ करने लगा, कुछ केबल मिल जाए, कुछ लकड़ियाँ, कुछ ऐसा सहारा मिल जाए जिससे मैं निकल जाऊँ। उसके बाद किसी तरह मैं निकला, फर्स्ट फ्लोर से कूद के निकला। इस जगह का नाम है रंगमारे। तो रंगमारे के इस तरफ मेरा तुमलोंग बोल के एक गाँव है, वहाँ भी एक परिवार है, उसका परिवार नहीं पता, वो लोग तो ठीक है, लेकिन उससे आगे एक बाहरे दाजू बोल के है, उसका परिवार जो अभी हम लोग से संपर्क नहीं है। अभी मंशीथांग में पता चला कि कोई मिसिंग है बोल रहा है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि 4-5 आदमी मिसिंग है। ब्रिज तो चला गया, यहाँ से भी हमारा चुंगथांग के अंडर में 3-4 ब्रिज तो चला गया है। अभी मंशीथांग से रबम से आगे तो लाचेन तक तो जा सकता है गाड़ी, उसके आगे भी बंद है। सब लोग बता रहे हैं, अभी राशन के लिए बोल रहे हैं, थोड़ा दवा के लिए ऐसे बात कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे आप ये? अभी ट्रांसपोर्टेशन करके कोई यंग वॉलंटियर लोग आएगा, उसको लेकर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। Chungthang would have seen more casualties had the first responders not been prepared. नीचे से हम लोगों को भेजा गया कि सैटेलाइट के थ्रू वो ग्लेशियर में कुछ हलचल है, तो इसके लिए आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ के सिक्किम पुलिस का, फायर का, SDM ऑफिस, NDRF, BDO साहब, ADC साहब, SDM साहब, ये सब मिल के हम लोग कंपनी का जो है वो सब मिल के एक मॉकड्रिल कंडक्ट किया था। उसमें क्या था कि आप कहाँ पे ले जाना है, जब ऐसा सिचुएशन होगा तो आप लोग रेस्क्यू करके कहाँ पे ले जाना है। तो उस टाइम ये फिक्स हुआ कि बहुत अच्छा है, ये थोड़ा ऑफ है, एक साइड रिवर साइड से थोड़ा वहाँ पे कितना दूर है ये चुंगथांग से? ये लगभग 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अप्रोक्स इतना है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक मॉकड्रिल कंडक्ट किया उस टाइम, ये हेल्थ का सब मिल के एक मॉकड्रिल किया, और उसके बाद वो हम लोग का प्रॉस्पेक्ट था उस टाइम, क्योंकि अभी जो है वो जो मॉकड्रिल किया उसका हमारा प्रॉस्पेक्ट है। The breathtaking beauty of the hills of Sikkim are a major draw for tourists. But apart from the breathtaking beauty, these are also ecologically fragile and sensitive areas and prone to nature's fury when the river runs amok. That is what happened in this tragedy. And with interventions on the flow of the Teesta, many are complaining that there needs to be a check on how much to build on such rivers. Even as tourists and people are being evacuated and locals are being shifted to relief centers, the focus remains on high altitude glacial lakes in Sikkim and the cascading effects on the hydropower dams on the Teesta. Even lawmakers admit there are glaring gaps. Early warning system, even the government of India and the Ministry is also working on this. So in entire range of Himalayan, I think early warning system is yet to be completely installed, but the work is going on. And I think as far as I know, a certain amount has been
sanctioned in in this previous budget, but the implementation process is there. So we are yet to have that complete warning system. But as far as this calamity is concerned, the warning was there. Warning was given. That is why a whole lot of people were evacuated. NDTV was among the first television teams to visit Dikchu Dam further downstream, which has also seen massive damage. The impact of the floodwater on the dam is unbelievable. The impact of the Teesta Flash Flood is really visible when you visit the dams that have been built along the Teesta. We are at the Dikchu Dam. This is the approach road to the dam. As you can see, the approach road has been completely washed away. Look at the control room of the dam in the picture. The water has obviously flown over the dam. There was so much volume of water that it's washed away the approach road to the dam. It's also washed away all the control rooms, etc. of the dam, thereby giving you an idea of the extent of the damage and the amount of water during the flash flood. The violent Teesta water that is still flowing through the dam, of course, has completely damaged this hydropower project. Even in Dikchu town, homes have been washed away. 3 तारीख रात को जो रोनाक लेक में जो बादल फट गया, उसके साथ में जो पानी बढ़ा हुआ है, उसके साथ जो आया है, जो डैम में यहाँ था, जो ऊपर में जो बनाया हुआ था, उसको थोड़ा सा कुछ गड़बड़ या क्या हो सकता था, उसके लिए तो डैम फट गया. और आदमी को यहाँ क्या है, एक डर पैदा कैसे हुआ था, जो आया है एक बार. अब जो आने के बाद में इस डैम से फिर फ्यूचर में क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, एक तो डर पैदा हुआ रहा है. मगर इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ का, ये गवर्नमेंट टोटली पब्लिक को रिहेबिलिटेशन करने के लिए, पब्लिक को राहत देने के लिए, हम सिक्किम का जो आदमी है, ये तो डेवलपमेंट के लिए तो प्रोत्साहन कर रहे हैं. डेवलपमेंट होना चाहिए, मगर डेवलपमेंट साथ साथ में जो पब्लिक का ये भी होना चाहिए, वो भी बचना चाहिए ना. वो उसके लिए थोड़ा डैम का बस है, आदमी को डर पड़ गया. जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है गलत तरीके से हुआ है हमारा नज़र से, क्योंकि अब ये जो दिख रहा है पानी का लेवल जहाँ तक आया था, इस बार दिख रहा है वहाँ तक ये लोग को पहले प्रोजेक्ट चालू करने से पहले डैम जब बना उसका साथ साथ में इसको रिम ट्रीटमेंट करना चाहिए. बाद में हम लोग कई बार डिमांड भी किया कि ये जितना जो पानी रिजर्व होता है उस एरिया में आप लोग प्रोजेक्ट बंद करो, डैम क्लियर करो, पहले इसको प्रोटेक्ट करो, उसके बाद डैम चालू करो. तो हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ. जो एक ऑनसीन हीरो है जो अभी डेथ भी हुए हैं, उसको वो गेट खोलने के लिए जा रहा था, वो वॉश आउट हो गया. 37-year-old Dawa Shiring Lepcha was working at the Dikchu Dam when the flash flood hit. He did not make it out alive. His body was found downstream 2 days later. Alongside the stories of tragedy, of loss, of grief in this Teesta flash flood, there are some who tried to save whatever they could. Dawa Shiring Lepcha, 37 years old, was working at the dam when the flood waters came. भाइले खबर गरेछ, ऊ अतालेर निस्किँदाखेरि माथि कुद्दै निस्किँदाखेरि ड्यामबाट उँभो निस्किँदाखेरि त्यहाँबाट अतालेर निस्केर उसले चाहिँ उसको आप्पालाई फोन गर्यो, त्यहाँबाट मात्रै हामीले इन्फर्म पायो. तर ड्यामबाट चाहिँ हामीलाई केही इन्फर्म दिएन, केही गरेन. हामीले त्यो भाइबाट मात्रै याद पाएको, अरू केही याद थिएन हामीलाई. नभए उसले नभनेको हामी याद हुन्थेन. हम लोग खबर मिला कि वो लोग नाइट को वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, उसी वक्त सडनली ऊपर नॉर्थ सिक्किम से वो टीस्टा फ्लड होकर आ गया. पानी इतना जोर, इतना स्पीड से है कि कोई कुछ नहीं कर पाया. जहाँ तक हम लोग को मालूम पड़ा कि वो हमारे जो भाई था वो नीचे डैम के अंदर जाकर वो गेट खोलने के लिए गया था. गेट खोल के शायद ऊपर निकल रहा था, वो कुछ कर रहा था, इसीलिए मैं भागते भागते वो अपने आप को बचा नहीं पाया. वो 3 तारीख रात को ये काम हुआ, ये इंसिडेंट हुआ. 4 सुबह को हम लोग इधर उधर जाके ढूंढा, लेकिन फिर भी नहीं मिला. फिर 5 तारीख को जा करके हम लोग देखा तो उस पर जंगू एरिया साइड में इनका बॉडी हम लोगों को मिला. Further downstream, the towns of Singtam and Rangpo have suffered massive damage. These are towns on the National Highway 10 connecting Sikkim to the rest of the country. Entire parts of the town are buried under slush. Several bridges have been washed away. After causing devastation upstream, the Teesta continued to flood towns downstream like Rangpo. This, of course,
is the natural flow, but the waters rose at least 15 to 20 meters, and that is what caused homes, roads and other structures along the banks of the Teesta to be washed away. Right now what you see are only remnants of what has been washed away in the distance, but this damage to infrastructure is something that's going to be really difficult for Sikkim to rebuild and compensate. ये सामने एक एलडी का जो ब्रिज था वो भी टोटली वॉश आउट हुआ। यहाँ वो साउथ और ईस्ट के कनेक्शन था, मेन ब्रिज था। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रेम सिंह तामांग जी ने रेगुलर विजिट कर रहा है। कल ही हैज एश्योर्ड दैट द बेली ब्रिज विल बी एस्टैब्लिश्ड वेरी सून। लोगों ने देखा जब पानी आया कैसे बह गया। हम लोग ने देखा पानी तो पूरा हाइट तक आया था इधर। ऊपर से कोई ये जो ऊपर चुंगथांग का जो डैम है, जो टीस्टा बाजार डैम है, वो डैम फूटने के कारण से पूरा वाटर लेवल हाई हो गया और इसलिए ये ब्रिज वॉश आउट हो गया। The town of Rangpo in complete ruins. Now, what you see is, of course, what used to be a construction site, what used to also be a parking area for cement mixers, cranes, earth removers, which are all heavy equipment, but all of it seems to have been completely submerged in the slush. The extent of the damage in places like Singtam is unbelievable. Cars still completely buried in slush and slurry from the flooded Teesta waters. Even this side, houses submerged in slush that has been left behind by the flood waters. What we are standing on is actually at least about 5 feet or 6 feet from the ground here. Cars, homes, everything is submerged in slush. बादल तो फटा है, ये क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, उसके बाद लोनाक लेक के ऊपर आ गया और लोनाक लेक ब्रस्ट हो गया। उसके बाद जो आया वहाँ से जो फ्लड आया, उसके फ्लड आने के बाद जो टीस्टा डैम जो था, टीस्टा थर्ड का जो डैम था सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड का, वो पूरा वॉश आउट होने के कारण वहाँ से वायलेंट होके पूरा वाटर का वॉल्यूम बढ़ के आया। बढ़ने के कारण यहाँ जितना भी लोअर बेल्ट में पूरा डैमेज हो गया ना, ये बिकॉज ऑफ द सब स्टैंडर्ड वर्क प्रीवियस गवर्नमेंट के टाइम में हुआ था ये। क्योंकि आप देखिए वहाँ से पूरा वायलेंट होके आया, पूरा वाटर का वॉल्यूम बढ़ गया, पूरा मतलब फ्लड बहुत बढ़ गया। लेकिन दूसरा जितना भी एनएसपीसी ने बनाया हुआ डैम कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, कोई भी एक भी मतलब कोई भी बर्बाद नहीं है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के कारण बना था टीस्टा इज ए थर्ड, वो डैमेज हुआ। While the army has done a phenomenal job in helping with rescue and restoration, it has also been badly hit itself. Chief of Army Staff General Manoj Pandey visited North Bengal and Sikkim on 8th and 9th October and took stock of the flood situation. General Pandey, accompanied by Eastern Army Commander Lieutenant General Rana Pratap Kalita and General Officer Commanding Trishakti Ko, Lieutenant General BPS Kaushik, flew over the flood-affected areas to assess the situation. The Army Chief interacted with the Chief Minister of Sikkim, Mr. Prem Singh Tamang, and assured him of all assistance. The Director General of the Border Roads Organization briefed the Army Chief about the initial damage assessment and plans for restoration of affected roads and ridges. There has been huge damage to the civilian, particularly to the infrastructure as well as life. As far as Army is concerned, there are 22 people who were swept away, out of which 10 mortal remains we have been able to recover. We formed small teams along with the representative of the local state government and police, which went in the villages which were situated on the banks of the Teesta river, basically to make the people aware of the dangers that is posed by these explosives which are there all along the riverbed. But at the Bardong military camp near Singtam, vehicles and personnel were buried under debris and slush, and ammunition and men were also swept away. We are standing right next to the Bardang camp of the military, which is of course just alongside NH10, and you can see the extent of the damage. Several military vehicles trapped under the debris. The camp has been completely washed away, so there's also a fear that several army vehicles may have been washed away with all its content. But it's not just Sikkim that has been affected. Further downstream in West Bengal too, homes and National Highway 10 has been swept away. This would have been a door for a fairly tall person to get through, completely
filled with sludge, homes filled with sludge. The roofs of these homes washed away. This is what remains of a home, sheets that used to be of someone's home, completely washed away by the river at this point. The NHN almost it's collapsed because of there is so many dam out there. Hydro project is there, so because of that, and railway project is going on. So this NHN, I think there is no future of NHN. Furthermore, so there needs to be an alternative road also. There definitely need alternative road. We are on what is National Highway 10, or the main highway connecting Sikkim to the rest of the country, and this is what is the situation on the road. Completely filled with sludge. Look at how much sludge there is. It's covered almost the entire wheel of this Jeep. That bridge, of course, is also one of the major bridges of connectivity, and even there the road has been completely cut off. The Teesta has always been known as a river of currents. It's a mountain river that flows down even in normal times with great velocity. But this time it was simply too much to bear. The amount of water destroyed everything in its path. And while there will be an investigation into what led to this mammoth tragedy in a small state like Sikkim, the question is, Sikkim has been pushed back by years and it needs our help. It's a state that will take years to recover from this tragedy. Sikkim has witnessed its worst natural calamity in decades. While in the short term the focus is on restoring roads and bridges, in the long term it will have to think of a development model that is more in sync with nature. With Ratnodeep Chaudhary, Pankaj Dhungel and camera person GD Shankar, Saurabh Gupta, NDTV.